Now today we are going to do sums of cash book, which has two columns, cash and bank. Now here we are going to study very interesting concept of contra entries. Okay, and this is the foundation. This two columnar is the foundation for the three columnar what we are going to do in the next lecture. That is where you have discount, cash and bank. So please pay attention and try to understand how we record the transactions over here. Now illustration 3 is what we are going to start with. From the following transactions, prepare cash and bank columnar cash book in the book of Gayatri Brothers. For which month? April. So write the heading. For the month of April 2015. Now, here we are having cash column as well as bank column. So here we will be having two opening balance, cash balance and a bank balance. So 2015 opening cash balance 6,000, opening bank balance 5,000. So opening balance will come on the receipt side. So 2015 April 1, balance bought forward, cash balance is 6,000 and bank balance is 5,000. Now bank, it can be bank balance, it can also be bank overdraft. If it is bank overdraft, it will come on the payment side. Okay, right now it's not there. So it's cash balance, bank balance, both will come on the debit side or receipt side. Next, third one, goods of 10,000 sold to Pankaj for cash at 10% trade discount. Which side we will record it? Receipt side. Receipt side. Okay. So now on the receipt side, third, two sales account 10,000 ka goods, 10% trade discount, so 9,000. Next, fifth, goods of 3,000 purchased for cash from Janki. Which side it will come? Payment side. Payment side. We are buying, so we are giving cash. So cash goes out 2015. April 5th, buy purchases. 3,000 sold, 3,000 purchased for cash from Janki. So cash column 3,000. Cash column 3,000. Seven, market important, cash of rupees 1,500 is deposited in the bank. Market important, now let's understand what are contra entries. Now over here in your cash book,
you are having two columns. One is cash and one is bank. So I'll write over here C and B. Cash and bank. Now, because we are having both cash as well as bank over here, and we are going to record a transaction like this: cash deposited in bank. Amount is rupees 1500. Okay, a transaction like this. It means here in our cash book, which has two columns, cash as well as bank, here it is going to affect our cash balance also and bank balance also. Now इसको समझना कैसे है? You understand the concept first. Cash deposited in the bank. तो वो किसको अफेक्ट करेगा? एक तो हमारे बिजनेस में जो कैश का बैलेंस है उसको अफेक्ट करेगा, और दूसरा हमारा बैंक का बैलेंस है उसको अफेक्ट करेगा. नाउ टेल मी, कौन सा बैलेंस बढ़ेगा जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे? तब कौन सा बैलेंस बढ़ेगा? कैश बैलेंस बढ़ेगा या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? Bank balance. Bank balance will increase. Do you agree? And cash Yes. balance will decrease. Do you agree? Yeah. तो जहां हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज, तो बैंक कॉलम ऑन रिसीप साइड, एंड कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ तो कैश कॉलम ऑन पेमेंट साइड. क्योंकि इंक्रीज हुआ तो रिसीव, डिक्रीज हुआ तो पेमेंट. अंडरस्टूड दिस? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? तो ये हमारा रिसीप है, ये हमारा पेमेंट है. अब तुम्हें क्या ध्यान देना है? ध्यान दो प्लीज. ओवर योर नजर स्क्रीन से हटना नहीं चाहिए. यहां पे तुम्हें क्या ध्यान देना है कि बैंक बैलेंस रिसीव साइड यानी डेबिट साइड इंक्रीज हो रहा है, तो रिसीव साइड बैंक कॉलम में हम लिखेंगे 1500. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो रिसीव साइड बैंक बैलेंस बैंक कॉलम में 1500 आ गया, यानी बैंक में पैसा बढ़ गया. और पेमेंट साइड कौन सा कॉलम आएगा? कहां से पैसा गया? कैश. कैश कॉलम. तो पेमेंट साइड हम कैश कॉलम में 1500 लिखेंगे. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? तो पहले हम अमाउंट लिख देंगे ताकि अमाउंट में कॉलम में इधर उधर गलती होना चाहिए नहीं. नाउ यहां पे क्या लिखना है? बैंक में पैसा आया. कैसे आया? क्योंकि कैश डिपॉजिट किया, तो यहाँ बैंक कॉलम है, तो हियर वी राइट कैश कॉलम. एलएफ में वी राइट सी. बताऊंगा जब हम करेंगे एक्चुअल सम में. और पेमेंट, कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ, पर ये कैश किधर गया? तो कैश गया बैंक में. सो बाय बैंक अकाउंट. अगेन वी विल राइट सी. तो ये जो तुम्हारा एंट्री है, इस एंट्री को हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री. अंडरस्टूड दिस? क्यों कॉन्ट्रा? बिकॉज ये दोनों बैलेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. एक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और उसी फॉर्मेट में दूसरा बैलेंस डिक्रीज हो रहा है. समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ऐसी एंट्रीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज. नाउ इसमें दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है? दूसरा कैटेगरी हो सकता है जैसे कि कैश डिपॉजिटेड है. दूसरा कैटेगरी आएगा कैश विथड्रॉन. कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक.
say for example rupees 1000. now cash withdraw किया बैंक से, तो कैश और बैंक बैलेंस में कौन सा बैलेंस इंक्रीज होगा? Cash. Balance increase होगा, cash balance will increase. All of you agree with me? Cash balance increase हो जाएगा और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? Decrease. Decrease. हो जाएगा डिक्रीज. तो कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ तो हम कौन सी साइड लिखेंगे ये कैश बैलेंस? कैश बैलेंस कौन सी साइड लिखेंगे? कैश कॉलम कौन सी साइड? रिसीप्ट या Receipt side. सॉरी? Receipt side. So receipt side here we will write 1000 and bank column कौन सी side? Bank balance decrease. Payment. Payment side. अब ये तो हमने लिख दिया सी फॉर कॉन्ट्रा. यहाँ अब क्या लिखेंगे? टू व्हाट? ये कैश कॉलम में गया है तो इधर क्या आएगा? To bank account. टू बैंक अकाउंट. वेरी गुड. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय Cash. कैश. Cash. Understood this? Both the categories of contra entries. All of you understood this? So basically two categories of contra entries are there. One is cash withdrawn from the bank and other is cash deposited in the bank. हमें क्या देखना है कि कौन सा बैलेंस इंक्रीज, कौन सा बैलेंस डिक्रीज. जो बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ वो कॉलम में रिसीव साइड, जो बैलेंस हमारा डिक्रीज हुआ वो कॉलम ऑन द पेमेंट साइड. Understood this all of you? फटाफट स्क्रिप्ट करो ये ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे. Then we go to the sum. सर ये C किसके लिए लिखा है LF कॉलम में? और कॉन्ट्रा. सी शोज कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी इसका दूसरा इफेक्ट भी हमने सेम फॉर्मेट में ही दिया है. नहीं पर सर वो LF के कॉलम में लिखा है. एलएफ में रहेगा वो. मैं एक्चुअल फॉर्मेट में दिखाऊंगा तुम्हें. इट कम्स इन द एलएफ कॉलम. I'll tell you why it comes in the LF column also once we go to the format. Okay. Okay. Now इसको important mark कर दो. 7th को please mark 7th important. Now cash of 1500 is deposited in the bank. So deposited in the bank यानी बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया. So bank balance increase. So 1500 on the receipt side and cash balance decrease. So 1500 on the payment side. Now over here date is 7. By bank account. In the LF column you write C. I'll tell you why. And over here on 7th you write to cash account. In the LF column you write C. Now why are we doing this? That's the question. Why we are writing C? We are writing C because यहाँ पे कैश अकाउंट भी इसके अंदर है, बैंक अकाउंट भी इसके अंदर है. तो ये दोनों का लेजर पोस्टिंग होने वाला ही नहीं है क्योंकि दोनों यहाँ पे ही इसी कॉलम में मौजूद है. इसके लिए लेजर फोलियो यानी लेजर पेज नंबर हम यहाँ पे लिखते नहीं है. इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं C for contra because we are having both the entries in this format only. Okay, ये एंट्री पता चल गया सबको? एंट्री पता चल गया सबको? Should I proceed? Yes sir. Okay, now let's go to the next one.
stationery expense 1000 and salary of 3000 paid by check. So payment paid by check by stationery expense paid by check. So bank column 1000 and by salary account again paid by check 3000. Now 11th one 1100 paid towards a shop rent. So again payment side paid, so nothing is given, so cash 11th by shop rent 1100 cash column. Check of 3000 received from Yesha is immediately deposited in the bank. So bank में immediately deposit कर दिया. So 14th receipt side to Yesha account. $3,000 bank column to Yesha account, 3000 bank column. 1000 withdrawn from the bank for बैंक टू पे यानी अभी तक पे किया नहीं है, टू पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम मार्केट इंपॉर्टेंट 17. Now over here 1000 withdrawn from the bank to pay fire insurance premium. What is the journal entry for this? Can you tell me the journal entry for this? Cash account debit to bank account credit. Cash account debit to bank account credit. So cash account debit amount is 1000 to bank account. Credit amount is 1000. Very good. Now journal entry से भी तुम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो. यहाँ पे you have withdrawn, so cash balance increase. तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट 1000. So कैश बुक में कैश डेबिट साइड we record 1000 contra. Then बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, बैंक अकाउंट क्रेडिट. So बैंक कॉलम में 1000. This way also you can do it, or you follow the other explanation that cash balance increase. So receipt side cash column, bank balance withdrawn from the bank balance decrease. So payment side bank column. Now date is 17th by cash account and 17th to bank account. I'll highlight this. Highlight is for contra entry. Any doubt anyone? Should I proceed? सबको कॉन्ट्रा पता चला कौन से कॉलम में क्या लिखना है? Okay,
Let's proceed for the next one now. Furniture of 800 purchased for household and check for the necessary amount is issued from the bank account of business. Now furniture हमने घर के लिए खरीदा पर चेक हमने बिजनेस बैंक अकाउंट से दिया. So 21 क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय फर्नीचर या बाय ड्रॉइंग्स? By drawings. By drawings. Owner took this furniture, check of 800, so bank column 800. Now 23rd देखो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कितना विड्रॉ किया था? 1000. अब हमने वो पे कर दिया. सो पेमेंट साइड 23rd by fire insurance premium account. कैश में 1000 पे कर दिया. सर बैंक में नहीं आएगा. नहीं, क्योंकि सर बैंक से विड्रॉ किया. बैंक से विड्रॉ करके वो रुपए कहाँ रखे हमने? हमारे कैश बॉक्स में, और फिर हमने पे किया. तो फिर हमें कैश विड्रॉ करने का जरूरत क्या था थी? अगर हमें बैंक से ही देना तो हम चेक दे देते. अंडरस्टूड? Yes, yes. You read the transaction properly. It is written. सर एक मिनट पहले आप पेमेंट में कुछ पहले पेमेंट वाला टॉपिक में हाँ, कुछ काम है. 1000 withdrawn from the bank to pay fire insurance premium. So we are withdrawing cash and then fire insurance premium paid. तो कैश आया, वो ही हमने पे किया. Got it? यस सर. मानव? Okay. Let's proceed. 27th. Place an order with Akbar Bhai for supply of goods. We write a note. Monica. Yes. We write a note for this. April 27, non-economic transaction. Okay, now as you can see over here, you have cash and bank both. So सबसे पहले you have to make a format like this, a working format. What I have made like this. This is the working format for bank. Okay, let me change this. Cash and bank. So first we do the total of cash debit balance. So cash का debit balance का total हम यहाँ पे करते हैं रफ में. यहाँ रफ में just a minute. Okay, so यहाँ पे हम डेबिट बैलेंस पहले फाइंड करते हैं कि कितना आया. सो चेक कर लो 16,000 आया कि नहीं. Now, once you get the debit balance, you write it over here in the working. Then do the total of credit balance and check कितना आ रहा है. Are you getting 6,600? और फिर डिफरेंस फाइंड करो दोनों का. So डिफरेंस आ रहा है 9,400 का. So ये हो गया हमारा कैश का बैलेंस. डिफरेंस इज अवर क्लोजिंग बैलेंस. तो पहले हम कैश को क्लोज कर लेते हैं. विच साइड इज मोर? ऑलवेज डेबिट साइड इज मोर. तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे पहले 16,000. Same we write on the credit side 16,000 or just a minute.
और उसके ऊपर हम लिखेंगे हमारा बैलेंस दैट कम्स टू 9,400. सो ये हो जाएगा हमारा लास्ट डे ऑफ द मंथ इज 30th बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 9,400. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. Let's use some good colors. Okay. Now, बैंक में जाते हैं हम. बैंक में we have to see which side is more. Okay, generally debit is more, but even credit can be more because bank gives you a facility of withdrawing money more than what you have in your bank balance, known as bank overdraft. So here we have to be careful, and that's why we are doing it in the rough first. So debit ka balance, let's see total, credit ka total. Let me use the word total over here. So iska total is 5,800, and then let's see the difference. $3,700. So now, as you know, debit side total is more. So बैंक में debit side का total करेंगे. पहले लिखेंगे debit side 9,500. फिर same हम लिखेंगे on the credit side 9,500. उसके ऊपर balance that is 3,700. Now, is the sum over? No. Over? No, the sum is not over. So ये महीने का closing, next month का opening. So May 1, 2 balance bought forward 9,400 cash column में and 3,700 bank column. Go through the sum, see if you have any doubts. If not, prepare the format for illustration 4. Corresponding sums I have already done in my lectures, which are already there on the app. So you can refer that while you do the homework. Illustration 4, you mark it important. It's a very nice sum. And such concepts can come in a 3-columnar cash book as well. Mark this question important and make format for illustration 4. Similar format. Now, illustration 4, page number 166. Mark it important for your exam. Okay, it's a very good sum for practice. Now, let's read the question. From the following transaction, prepare cash and bank columnar cash book in the books of Dharmishtha. So please write the heading of Sri Dharmishtha for the month of May 2015. Write the heading. Now, first one, 2015 May 1, cash balance 7,000, bank overdraft 2,500. Now, what is bank overdraft? Bank overdraft means you have withdrawn in excess of your बैंक बैलेंस, यानी बैलेंस से भी ज्यादा पैसा ले लिया. तो बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी साइड आएगा कैश बुक में? बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी साइड आएगा कैश बुक में? पेमेंट साइड. पेमेंट साइड आएगा. वेरी गुड. सो कैश बैलेंस रिसीप्ट साइड,
bank overdraft payment side. So let's write 2015 May 1. To balance bought forward cash balance 7,000 cash column में 2015 May 1 by balance bought forward बैंक कॉलम में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट સર આ ઓવરડ્રાફ્ટ વાળું હજુ એકવાર સમજાવો ને. શું સર ઓવરડ્રાફ્ટ વાળું ખબર નહીં પડી. એટલે you can withdraw more than your bank balance એટલે તારા બેંકમાં 5,000 છે તો bank will give you permission to withdraw 10,000. So when you have availed bank overdraft, it means you have to give this money to the bank. So your payment is more than your receipt. Understood this? યસ. But it is not possible for cash because can you spend more than what is there in your pocket in currency notes? નો. So cash में हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा बैंक में it can be debit it can be credit because बैंक में बैलेंस भी हो सकता है या बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है. Overdraft means now we have to pay money to the bank. Got it? યસ સર. Okay. Now second, goods of 7,000. હેલો સર. Now, બોલો રોહન. હા સર, આપણે પેમેન્ટ્સમાં તમે જે પેલું બાય બેલેન્સ લખ્યું છે તો એમાં બીએફ ની જગ્યાએ સીએફ નહીં એટલે કેરી ફોરવર્ડ નહીં આવે, બ્રોડ ફોરવર્ડ. એટલે આ મહિનાનું આપણે નેક્સ્ટ મંથ લઈ જઈએ તો કેરીડ ફોરવર્ડ આવે. પાછલા મહિનાથી આ મહિનામાં આપણે લઈ આવીએ તો બ્રોડ ફોરવર્ડ કહેવાય. અચ્છા, ઓકે. ગોટ ઇટ? અહીંયા આપણે એવું જ કર્યું. જો અહીંયા આપણે નીચે શું લખ્યું CF, અચ્છા, અને અહીંયા આપણે શું લખ્યું BF. Got it, Rohan? યસ સર, યસ સર. BF એટલે bought forward. Got it? યસ સર. Okay. Now let's proceed. Now goods of 7,000 sold to Urvashi. Cross check is received from her, which is deposited in the bank. Which side it will come and which column? રિસીપ્ટ. Receipt column, receipt side and bank column to sales account. 7,000 Next, goods of 2,000 sold to Ashok at 10% trade discount. 50% amount is received in cash and for the balance amount check is received which is deposited in the bank. So 2,000 का sales किया, 50% at 10% trade discount, 50% cash में मिला, 50% check से मिला. So 2,000 minus 10% is 1,800. So 900 cash and 900 check. So record on the receipt side 4. To sales account 900 cash, 900 bank. Trade discount will not be recorded in books of account. Fifth को mark करो, important. Fifth is our contra entry. So C लिखा है मैंने और mark कर दिया. 2,000 cash deposited in the bank.
सो रिसीप्ट साइड कौन सा कॉलम आएगा? बैंक में डिपॉजिट किया तो रिसीप्ट साइड कौन सा कॉलम आएगा? बैंक बाकी सब कौन सा कॉलम आएगा? कैश कैश अकाउंट। रिसीप्ट साइड कौन सा कॉलम आएगा? कैश डिपॉजिट किया बैंक में। कैश बैंक नहीं आएगा। बैंक कौन बोला ये कैश? कौन बोला? अच्छा, बोल के छुप गया। भाई दिमाग लगाओ प्लीज। 2000 कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। तुम ये लेक्चर कॉपी करने के लिए नहीं अटेंड कर रहे हो कि सर पढ़ा रहे और हम कॉपी कर रहे, बुक भर गया, मजा आ गया, पेरेंट्स भी खुश, हमको भी लगा पढ़ाई किया। थोड़ा दिमाग लगाओ, जागो। 2000 कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब मैं ट्रांसलेट करूंगा बिकॉज मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ट्रांसलेट करना भी है क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है। सो 2000 रुपया कैश लई અને બેંકમાં જમા કર્યા, 2000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। तो रिसीप्ट साइड कैश बुक में कौन से कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे ₹2000? बैंक। बैंक बाकी सबको क्या हो गया? गले में म्यूट है या सिस्टम में म्यूट है या दिमाग में म्यूट है? बैंक बैंक सर बैंक। बैंक ये पता ही नहीं सर क्या बैंक। हो रहा है। कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है। क्या आएगा भाई, कैश या बैंक? बैंक। बैंक वेरी गुड, अब समझ में आया। 2000 कैश बैंक में जमा किया तो बैंक का बैलेंस हो गया इंक्रीज। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes. चलो थम्स अप दे दो, मुझे पता चले कितने लोगों को समझ में आया। थम्स अप यानी अंडरस्टूड, ठेंगा नहीं कि सर को ठेंगा दिखा दो। बढ़िया, चलो ओके ग्रेट। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, इट्स ओके, तुमसे गलती हुआ हो सकता है, ये कॉन्ट्रा है ही ऐसा। ओके, कॉन्ट्रा सिर्फ गेम खेलने का मजा आता था, पर ये कॉन्ट्रा पढ़ाई में आ गया। खेले हो कभी कॉन्ट्रा गेम? कॉन्ट्रा Yes, sir. था जब Yes, sir. एडवांस नहीं था, तब मारियो ब्रदर्स, कॉन्ट्रा, Yes, sir. ये सब गेम्स चलते थे। एनीवेज, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा में तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें ये देखना है कि क्या हो रहा है। तो पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, फिर उसको समझना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है क्योंकि ये इंग्लिश में दिया है, समझ सकता हूं। तो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश में दिया है 2000 कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। यानी तुम्हें अब ये सोचना है कि कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ तो रिसीप्ट साइड बैंक कॉलम में आएगा 2000 और पेमेंट साइड कौन से कॉलम में आएगा 2000? कैश कैश कॉलम में आएगा 2000। यहाँ पे हम लिखेंगे सी फॉर कॉन्ट्रा, डेट इज 5th, बाय कैश है तो बैंक अकाउंट और बैंक कॉलम है तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा? टू कैश अकाउंट कैश अकाउंट। यहाँ पे भी लिखेंगे सी कॉन्ट्रा, इसका लेजर पोस्टिंग नहीं होगा, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं।
All of you understood this? Should I proceed now? Most important है because एक कॉलम इधर से उधर गया तो कैश बैलेंस भी रॉन्ग, बैंक बैलेंस भी रॉन्ग. अगर कंफ्यूजन होता है तो जर्नल एंट्री बना लो. जर्नल एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट. ध्यान दो, बैंक अकाउंट डेबिट तो डेबिट साइड बैंक अकाउंट यानी बैंक कॉलम. कैश अकाउंट क्रेडिट तो क्रेडिट साइड कैश कॉलम. इज दिस क्लियर? एक बार दीप पेन ना खाइस. देयर आर बेटर थिंग्स टू ईट. ओके, नाउ एक बार तुमने कॉलम बराबर लिखा, फिर पर्टिकुलर्स में क्या लिखना वो बहुत ही सिंपल है. ठीक है? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. 7. Purchase of 5,000 rupees 5,000 machine of rupees 5,000 purchase check of necessary amount is issued. Purchase किया, check issue किया, so 7 by machine account. Bank column 5,000. Next, check of 6,000 is received from Mansi towards receivable which is immediately deposited in the bank. तो हमें मानसी से चेक मिला जो हमने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया. सो रिसीप्ट साइड 9 to मानसी अकाउंट. 6,000 बैंक कॉलम. 6,000 bank column. Wages 500, telephone bill 500, electricity bill 1,200 paid by check May 11. So by wages 500 by telephone expense. All are paid by check 500. By electricity expense 1,200. Proceed. 2,000 withdrawn from bank. 2,000 withdrawn from bank for payment of insurance premium. Now you are withdrawing from the bank and taking the money to your office. So here it's a contra entry. Now first you do this entry on your own. And then I'll ask you which column it's to be written. Do it on your own. 2,000 बैंक से withdraw किया for payment, but अभी तक pay किया नहीं. So कैश बुक में रिसीप्ट साइड कौन से कॉलम में आएगा? 2,000 Cash. कैश कॉलम. वेरी गुड. सो कैश कॉलम और पैसा बैंक से गया तो पेमेंट साइड कौन से कॉलम में आएगा? Bank. बैंक. वेरी गुड. 2,000. सो 2,000 contra date is 13 by cash account. 13th receipt side to bank account. Let me highlight it.
Any doubt, anyone? Any doubt? Okay. Now, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1600, तो 2000 का कैश लेके आए, उसमें से 1600 पे किया, तो जो पे किया वही रिकॉर्ड करना है 15 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 1500 1600 कैश में पे किया, (21st) bank debited 150 to our account for interest on overdraft. बैंक ने हमें डेबिट किया तो कैश बुक में हम करेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज अवर एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि हमने बैंक से पैसा लिया है, तो अब हमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमारे लिए खर्चा हुआ. सो ये आएगा ऑन द पेमेंट साइड. एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस, it is informed to us through bank advice. Now you all know what is bank advice. मेरे लेक्चर में मैंने उसका फॉर्मेट भी दिया है मेरे वीडियो लेक्चर में. बैंक एडवाइस यानी बैंक एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के हमें कम्युनिकेट करता है कि वी hereby डेबिट योर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड फॉर बैंक चार्जेस. तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा, उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि बैंक में बैलेंस डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ. क्योंकि एक टाइम था जब मोबाइल एसएमएस नहीं था, इंटरनेट बैंकिंग नहीं था, तो बैंक ने कुछ पैसा हमारे अकाउंट से ले लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो बैंक हमें कम्युनिकेट करेगा विद अ पीस ऑफ पेपर नोन एज बैंक एडवाइस. गॉट इट? So ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही है. इट्स अ प्रूफ that bank has taken money from our account. It is our expense. So 21st payment side by interest on overdraft, बैंक कॉलम में ही आएगा. अमाउंट इज 150 and 21st by bank charges, amount is 100. Goods of 23rd, goods of 3000 sold to Dharti, cross check is received. 23rd को हमने गुड्स सेल किया धरती को और हमें क्रॉस चेक मिला. इट इज एज्यूम कि चेक मिला, वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. सो यहाँ पे 23rd को टू सेल्स, रिसीव साइड 3000, goods of 3000 sold to Dharti and we received a cross check. So bank column 3000. Now 24th को important mark करोगे तुम, 24th को भी important mark करोगे. A check of 3000 received from Tejal which is endorsed to Sejal. Now यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें चेक मिला from whom? From Tejal. वो हमने सेजल को दे दिया, एंडोर्स कर दिया, उसको ये चेक दे दिया. तो क्या ये चेक हमारे बैंक अकाउंट में सेम डे जा रहा है?
सेम डे ये चेक जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो चेक मिला वो हमने किसी और को दे दिया। तो तेजल से जो चेक मिला वो हमने एंडोर्स किया टू सेजल। तो हु इज द रिसीवर? 24th का जर्नल एंट्री आएगा, सेजल इज द रिसीवर, सेजल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 3000 and to Tejal account, amount is 3000. This check does not go to our bank account. Same moment we endorse it. अभी हमारे पास end of the day वो check हमारे हाथ में है ही नहीं. So this will be in note. You have to write. This will be recorded. In journal proper. You have to write this note. In journal proper. Please write the note. उसका यहाँ पे हम इफेक्ट देंगे नहीं. Got it, all of you? Okay. Now, bank inform about the dishonor of check issued by धरती. अब धरती ने जो हमें चेक दिया था 23rd को, वो चेक हो गया डिसऑनर यानी चेक हो गया बाउंस, यानी हमें पैसा मिला नहीं. तो हमने जिसको डेबिट किया था अब हमें उसको करना पड़ेगा क्रेडिट. अंडरस्टूड दिस? जो रिसीट साइड रिकॉर्ड किया था वो अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑन द पेमेंट साइड. हमें चेक मिला तो बैंक बैलेंस इंक्रीज किया, पर ये चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक बैलेंस को करना पड़ेगा डिक्रीज. सो पेमेंट साइड वी राइट बाय डेट लिख देते पहले. दिस इज 26. Here we write by Dharti account. Why we write the name Dharti is because when we sold goods, we consider it as our cash transaction, but we did not receive the money from Dharti. So now we have to record the name of Dharti. Amount is 3000 by Dharti account. Got it, all of you? नाम क्यों लिखा पता चला? Now let's proceed. 1500 paid to Vibod for settlement of account. 2000 withdrawn for personal use from the bank. So 28 को दो ट्रांजैक्शन है, हम पहला करते हैं paid to Vibod. So 28 by Vibod account. Take year 1500 cash column and 28 you withdrew 2000 for personal use. So directly owner वो 2000 लेके अपने घर चला गया. So bank balance decrease. Owner is the receiver. So by drawings account 2000 bank column. Now 29 and 30 mark it again important. 29 and 30. Now there are different ways we can handle such transactions. Okay, we will follow the textbook over here. We will not challenge it. Now यहाँ पे check of 3000 received from Virendra. Now normally हम क्या मानते हैं कि ये जो चेक मिला है
हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, पर 29 को हम इस चेक को अपने पास ही हमने रखा, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। वो मुझे कैसे पता चला? वो मुझे पता चला जब मैंने 30th को ट्रांजैक्शन देखा। नाउ 30th का ट्रांजैक्शन देखो टेक्स्ट बुक में, चेक ऑफ 3000 received from customer Virendra is endorsed in favor of Surendra। यानी ये जो चेक हमें 29 को मिला, वो 29 को हमारे पास था, और 30th को हमने ये चेक सुरेंद्र को दे दिया। समझ में आया ये? तो अब 29 को जो चेक मिला उसको कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इन अवर बैंक कॉलम। सो राइट 29 को रिसीव साइड, to Virendra account, amount is 3000। नाउ ये एक्चुअल बैंक में नहीं गया है, बट हमने सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया है। अब 30th को ये चेक वी एंडोर्स इन फेवर ऑफ सुरेंद्र। सो यहाँ पे सुरेंद्र इज द रिसीवर, सो सुरेंद्र अकाउंट डेबिट बैंक, ये जो चेक है वी आर गिविंग, सो चेक गोज आउट, बैंक इज द गिवर, पहले बैंक इज द रिसीवर किया था, तो अब हम कर देंगे बैंक इज द गिवर। सो पेमेंट साइड अगेन बैंक कॉलम 30th बाय सुरेंद्र अकाउंट 3000। नाउ यू विल से कि सर यहाँ पे क्या फर्क पड़ा? डेबिट साइड बैंक कॉलम में 3000 लिखा, क्रेडिट साइड भी बैंक कॉलम में 3000 लिखा, तो एक तरफ बैंक बैलेंस बढ़ाया और दूसरी तरफ बैंक वही बैंक बैलेंस को डिक्रीज कर दिया, यानी बैंक बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं, क्योंकि ये चेक बैंक में गया ही नहीं। प्रीवियस टेक्स्ट बुक में इट वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम, इन द न्यू टेक्स्ट बुक इट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों नलीफाई हो जाता है। You can also use one account known as checks on hand. So in that case, it will not be recorded in Cashbook. It will be recorded in journal proper. Anyways, right now we will follow the textbook, और ये endorsing वाला कुछ आया on different dates. So we will record it in the bank column when we receive, and again in the bank column when we give, or when we endorse. Is this clear, all of you? Understood this? Okay. Yes. Now all of the transactions are done. Time for closing the sum. Now सबसे पहले कैश का टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम करेंगे. So let's do the total and check. Debit side total is 9,900. Credit side total is 5,100. And the difference, let me see the difference. Difference comes to 4,800. So पहले हम कैश को क्लोज करेंगे. कैश में debit side, let me remove the extra. Okay, so cash में debit side 9,900, cash में credit side 9,900, इसके ऊपर balance is 4,800. It's month of May, so 31st May by balance
carried forward. Buy balance carried forward. Now let's check the bank, because you have seen कि बैंक में ओपनिंग था 2500 on the payment side. So your debit side or credit side, any of the side can be higher than the other one. So यहाँ पे let's see the total of bank. Debit is 21,900. क्रेडिट चेक कर लेते ज्यादा है या कम है? कम है, 19,950 है. So now the difference comes to 1950. So bank में भी debit side या receipt side is more. So let's do the total first over here. 21,900. Same total we do it on the credit side, 21,900, और उसके ऊपर बैलेंस 1950. 1950. तो ये जो बैलेंसेस हमने फाइंड किए हैं वर्किंग करके, वो हमें डायरेक्टली इसके ऊपर लिख देने हैं. अगर यहाँ पे बैंक का क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो बैलेंस वुड हैव कम ऑन द रिसीप्ट साइड, बट यहाँ पे इट्स नॉट द केस, सो वी रिकॉर्ड इट एज जस्ट लाइक कैश बैलेंस, just like we did the cash balance. Now, is the sum over? No. Is the sum over? No. No. For it. मई के बाद सबको पता है आता है जून. Unlock 1, June 1. So 2 balance bought forward 4,800 and 1950. सर एक मिनट वर्किंग कर. Oh, working, okay. Yeah. Whenever there is a cash and bank, अब जब हम 3 कॉलमनर करेंगे तो कैश बैंक तो आएगा ही और साथ में डिस्काउंट आएगा. सो इन दैट केस, ओके, फर्स्ट यू ऑलवेज बैलेंस कैश फर्स्ट and then you go for bank. But in bank, be careful. Credit can also be more than debit. That is possible. Credit can be more than debit. और ये negative हो सकता है. अगर ये negative हुआ, it means it is bank overdraft. तो हम यहाँ पे record करते to balance carried forward और यहाँ पे transfer करते by balance bought forward. Go through the sum, see if you have any doubts, any of the transaction. If endorsing is on the same day, you don't record, we record it in journal proper. If it's on the different day, then we record it first in the bank column, receipt side, and then in the bank column, payment side. Got it, all of you? Yes, sir. Okay, so now based on this, you do the homework by and watch my lectures and do the homework so that all the concepts are explained once again, and finish off the exercise sums connected with this.